Hello everyone. I hope you all are doing well at your home in this winter season. And today we are going to continue our work which we have started yesterday. Yesterday we have started exercise 14.1 and the name of the chapter is mensuration, and our topic which we are doing is how to find the circumference of a circle. In previous video yesterday we have completed question number 1, 2 and first three parts of question number 3, and now we will continue question number 3 right from part 4. Question number 3, and we will do its fourth part. We have to find out the perimeter of this given figure. Given that this is 4 centimeter, if this is 4 centimeter, then all will be 4 centimeter, and this is also 4 centimeter. To find out the perimeter of this given figure, again we don't have to deal with the dotted lines. हमें इन dotted lines को include नहीं करना है. हमें perimeter calculate करने के लिए हमें find करनी है length of these semicircles, or we can say arcs. Say this is L1, say this is L2, and say it is L3, and then the larger one, say this is L4. To find out the perimeter of this figure, we have to find out L1, L2 and L3, and thereafter we will find out L4, and at the end we will add them all to get the perimeter of this figure. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे. अगर हम L1 को ऑब्जर्व करें तो डायमीटर कितना है L1 का 4. So diameter is equal to 4 centimeter. Then radius will be equal to half of the diameter, 4 upon 2, which is equal to 2 centimeter. If radius is 2 centimeter, then length of the arc L1 will be equal to 2 pi r upon 2, because we are dealing with the semicircle, and the circumference of a semicircle will be equal to half of the circumference of a circle. 2 pi r is the circumference of a circle, and when we will divide it by 2, we will get the length of the semicircle, which is equal to L1. Now pi multiply r, r is equal to 2 here, so it has become 2 pi centimeter. In the given diagram we can observe L1, L2 and L3 all are equal, so we can say that L1 is equal to L2 is equal to L3, which is equal to 2 pi centimeter. L1, L2, L3 we have calculated. Now we have to calculate L4. अब सेमी सर्कल जो लार्जर सेमी सर्कल है उसका हमें लेंथ फाइंड करना है, मींस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. तो टू फाइंड आउट दी L4 हमें पहले L4 के लिए डायमीटर कैलकुलेट करना होगा. लेट द डायमीटर इज इक्वल टू, diameter is represented by capital D, and diameter will be equal to 4 centimeter plus 4 centimeter plus 4 centimeter. It is equal to 12 centimeter. Let the radius of the larger circumference, larger semicircle is represented by capital R, so it will become D upon 2, and the value of D is 12, so 12 upon 2 will be equal to 6 centimeter. We have calculated the radius. Now we can calculate its length, and the length of the larger semicircle is represented by L4. L4 will be equal to again 2 pi r upon 2, half of the circumference of the circle. 2 is cancelled by 2. Pi multiply r, r is equal to 6 here, so it has become 6 pi centimeter.
Now to find out the required perimeter, so required perimeter will be equal to L1 plus L2 plus L3 plus L4. Now add them all. 2 pi plus 2 pi plus 2 pi plus 6 pi. What we have done here? We have replaced the values of L1, L2 and L3 here. Now add them. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 6 12 pi centimeter. Answer. So the required perimeter of the given figure is equal to 12 pi centimeter. This is the complete and detailed solution of the given fourth part. Now move on to its fifth part. Now we will draw the fifth part. You can look the diagram from your book. We have to find out the perimeter of this figure, given that it is 7 centimeter. All these sides or edges are given as 7 centimeter to us. Again, we need not to find out the length of the dotted lines. हमें dotted lines की length find करने की need नहीं है. तो हमें कौन सी length find करनी होगी? हमें ये outer length, ये जो outer length है, हमें सिर्फ इनको कैलकुलेट करना है और इनको कैलकुलेट करने के बाद जब हम ऐड करेंगे, ऐड करते ही हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. The method will be almost same as we have done in previous questions. 7 centimeter, 7 centimeter, 7 and 7 centimeter. It is already given to us. So we have to find out the length of the arcs. Say this is L1, arc L2, arc L3, and this is arc L4. So after finding the value of L1, L2, L3 and L4, we will add them all to find out the perimeter of the required figure. How we will find out the length of the arcs L1, L2, L3 and L4? First we have to find out the diameter and thereafter the radius. Given that this is 7 centimeter and this is 7 centimeter, so obviously this will also be equal to 7 centimeter and this will also equal to 7 centimeter. Then to find out the length of the arc L1, we have to first find the diameter. बच्चों diameter calculate करना होगा पहले, और diameter कैसे आएगा? Diameter हो जाएगा 7 centimeter, क्योंकि it is like a square box, 7 centimeter 7 centimeter, राइट. तो जो हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं वो सर्कल अपना जो मैक्सिमम जो डायमीटर ऑक्यूपाई कर सकता है वो कर सकता है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उस 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा की हमारे पास लेंथ ही गिवन ही नहीं है, राइट. तो अगर हमें किसी स्क्वायर में अगर कोई सर्कल ड्रॉ करना होगा तो द मैक्सिमम डायमीटर, द लेंथ ऑफ द डायमीटर कैन बी 7 सेंटीमीटर ओनली. सो given that as per the given diagram, diameter of the given arc is equal to 7 centimeter, then its radius will be equal to half of the diameter, d upon 2. Put the value of d is equal to 7, so it has become 7 upon 2 centimeter. This is the radius. Now we have to find out the arc. बच्चों ध्यान से देखना कि ये सेमी सर्कल का भी हाफ है. First we have a circle. Roughly I am drawing the figure. जब हम इस सर्कल को डायमीटर के अलाउंग कट कर देते हैं, then we get a semi circle. और जब हम इसको भी मिडिल से कट कर देते हैं तो हमें एक ऐसी आर्क मिलती है.
these kind of arcs we are getting here, L1, L2, L3 and L4. तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल का भी हम हाफ कर देंगे. अगर आप L1, L2, L3, L4 फाइंड करना चाहते हैं तो पहले हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r. जब हम 2 पाई r को हाफ कर देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट पाई r. पाई r यहाँ से यहाँ तक की आर्क होती है. अब हमें इसको भी क्या करना है, हाफ करना है. तो हम पाई r को क्या कर देंगे, हाफ के लिए 2 से डिवाइड. तो ये जो आर्क है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई r अपॉन 2. एंड द सेम कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर. कीप वॉचिंग बाय फुल कंसंट्रेशन इफ यू वांट टू लर्न द कॉन्सेप्ट हियर. सो L1 will be equal to 2 pi r upon 2 multiply by 2. What we are doing? First हमने सर्कल को हाफ किया so that we will get the length of the semicircle, और हम उसको फिर से क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं. और if it is difficult for you to understand then change the method. First find the circumference. So let circumference is equal to 2 pi r. Then circumference of semicircle. This is the circumference of circle. Then circumference of semicircle, which is equal to 2 pi r upon 2. Then it will become pi r, and then find out the circumference of a quadrant. Circumference of a quadrant, which will be equal to pi r upon 2. Now we know that radius is equal to 7 upon 2. So L1 will be equal to pi is 22 upon 7 multiply r. R is equal to 7 upon 2 and this 2 in multiply. 2 is cancelled by 7 is cancelled by 7 and 2 11. So L1 has become 11 upon 2 centimeter. We know L1, L2, L3, L4 all are equal. So L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to L4 is equal to 11 upon 2 centimeter. Now to find out the perimeter of the given figure, we need to add them all. So perimeter will become L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. 7 plus 7 plus 7 plus 7. Now put the values of L1, L2, L3 and L4 here. But you will get, it will become 4 times 11 upon 2 plus 4 times 7. 2 2 is 4, 11 2 is 22, 7 4 is 28. 50 centimeter, and this will be your required answer. I think that you are getting confused by the word quadrant. So write down the solution and then I will share the concept of the quadrant of a circle. Look at here. Quadrant of a circle. जब हम किसी सर्कल को उसके डायमीटर के अलोंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इस तरह से डिडक्ट कर देते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री बन जाए, तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये जितने भी हमने पार्ट ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन्हीं पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट. लाइक एंड दिस इज द आर्क ऑफ ए क्वाड्रेंट. And in this figure I have named them as L1, L2, L3 and L4. तो ये होता क्या है, सर्कल का हाफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल को भी जब हम हाफ कर देते हैं तो ये जो आर्क होती है
इसी को हमने कैलकुलेट किया है इस क्वेश्चन के अंदर L1, L2, L3 एंड L4। सबसे पहले हमने सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मेंशन किया 2πr, लेकिन हमें पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस नहीं फाइंड करनी थी, हमें करनी थी एक क्वाड्रेंट की आर्क। तो क्वाड्रेंट तक पहुंचने के लिए पहले हमें सेमी सर्कल कैलकुलेट करना होगा। यहाँ C की हेल्प से हमने क्या फाइंड किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, जो कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का हाफ होता है। सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, तो हमने 2πr को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमें मिल गया πr। अब हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल फाइंड कर ली है, लेकिन हमें तो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस भी नहीं फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। हमें क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या फाइंड करनी थी, हमें आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी थी। इसलिए हमने क्या किया, हमने ये ऑब्जर्व किया इस डायग्राम से कि जो सेमी सर्कल होता है वो होता है इतना, ये रब कर दो, ठीक है। अब हमें सेमी सर्कल की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, हमने कंप्लीट लेंथ ए से बी तक हमने ये फाइंड कर लिया है, जो कि आई है πr। लेकिन हमने इसको फिर से कट कर दिया। जब हमने इसको फिर से कट कर दिया तो इट मींस इसका ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, ये भी हमने रब कर दिया। तो अब हमें सिर्फ फाइंड करनी है L1 की लेंथ, और ये L1 क्या है, ये कंप्लीट सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का हाफ है। तो इसलिए हमने πr को भी फिर से हाफ कर दिया, πr/2। एंड देन यू नो L1, L2, L3, L4 ऑल आर इक्वल, and then the required perimeter will be equal to the sum of all the sides, all the boundary. Now move on to the next part. Draw the diagram from your book. Third question, sixth part. Semicircle is given. अब आप सबको पता होगा, हम इसको L1 एज्यूम कर लेते हैं। वन मोर सेमी सर्कल, हम इसको L2 एज्यूम कर लेते हैं। एंड दिस इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज 16 सेंटीमीटर। diameter of the larger semicircle is 14 centimeter and diameter of smaller circle is 7 centimeter. So to find out the perimeter of this figure, again first we will find out the length of the arc L1, then we will find the length of the arc L2, and it is given to you 16. L1 plus L2 plus 16 centimeter will be the required perimeter of this figure. Given is the diameter of semicircle 1. So if diameter is equal to, say it is a larger one, so represented by capital D, D is equal to 14 centimeter, then radius will be equal to half of diameter, half of 14, which is equal to 7 centimeter. Say the smaller diameter, small d, is equal to 7 centimeter, then its radius will be equal to half of the diameter, half of 7, so it will become 7/2 centimeter. Now if the radius of the larger semicircle is 7 centimeter, then its L1 means circumference of semicircle will be equal to half of 2πr. Half of 2πr, cancel 2/2, you will get pi multiply r. Here r is 7 centimeter. Now you can observe one thing here, pi is the value of pi is 22/7, तो 7 से 7 cancel हो जाएगा, so we are putting pi as 22/7 into 7, cancel 7/7 and you are getting 22 centimeter. This is the length of L1. Now find out the length of L2. 2πr/2, 2 is cancelled by 2, pi is 22/7 and r, radius, small r is 7/2, right? You can put capital R here because radius of L1 is capital R and here it is small r. Cancel 7/7 and 22/2 11 times, it will become 11 centimeter. And the third one is 16 centimeter. So required perimeter is equal to, you can do one more thing, you can name it A, B, C. So it is become equal to L1
plus L2 plus AC. L1 is equal to 22 plus L2 is equal to 11 plus AC is equal to 16. Add them all. 6 plus 1 7, 7 and 2 9, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 49 centimeter. This will be the required perimeter of the given figure. This was quite easy. So move on to the next questions now. Listen students carefully. You have to write down all these solutions in your fair register, right? It will be checked.